Hey guys, what's up everyone? Welcome back to my channel. Thank you so much for tuning in. So now, as much as it is important as a photographer to improve your skills and learn those daily crafts, it is also important to run a photography business very importantly. You need to have a great business mindset in order to actually be a successful photographer. So today I'm going to throw some light on common photography mistakes done by photographers as per my experience. So without further ado guys, let's get started. Mistake number 1. So we as photographers have a common tendency of buying literally anything and everything. Those new camera brands and camera equipment, lenses and everything, they tempt us with such great equipment. They literally tell us that if we're going to use this particular camera lens or maybe this camera body, a level of photography would actually rise from this to maybe this. And that is all not true guys, we all know that. But what happens is because we see so much of views on that we often get tempted by it and we end up buying it. अब होता क्या है कि हम खरीद तो लेते हैं बट वो हमारे या तो 2 हफ्ते के बाद बैग में सिर्फ पड़ा रह जाता है या कुछ महीनों बाद we just end up selling it for a very cheap price. Now that is a very bad decision on your business aspect. So आप कर क्या सकते हैं, my take on this is, अगर आपको सच में लगता है कि ऐसा कोई particular equipment है जो आपको बहुत ज़्यादा need है for a particular project, just rent that out. आप उसको 2-3 projects के लिए rent कीजिए, उसको use करके देखिए, and अगर आपको फिर लगता है कि actually buying this will help you, then only just buy it and go for it. Otherwise, just prefer to just rent the equipment जो आपके use में बहुत rare आता है. Second most common mistake done by photographers is not investing in proper storage and hard drives. I mean, this really saddens me as well. I mean, I've seen so many photographers saving every single penny that they have on hard disks and SD cards. Guys, this is one segment where अगर आपको extra भी pay करना पड़ता है, then please do. I have seen so many photographers sharing their worst experiences, how they didn't have proper backups or they didn't have proper or good quality SD cards and they lost their data. I mean, that is a nightmare in a photographer's life. So what the solution is, have at least good quality of hard drives, which is maybe I recommend personally having lacy hard drives. So lacy में क्या होता है कि they have a really nice cushion around the hard drive which the company gives in itself. I agree that the hard disks are a bit expensive than the normal ones, but the quality and the premium that you actually paying for is really worth it. अगर आप lacy की hard drives नहीं ले सकते हैं, then at least buy a Seagate or a WD hard disk. Those are also good enough. In addition, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता कि आपको कितने बैकअप्स रखने चाहिए, then मैं पर्सनली जो फॉलो करता हूँ is a triple backup scheme. This is something which the whole industry does actually. अब होता क्या है, जैसे ही आपका इवेंट खत्म होता है, आप डायरेक्टली अपना जो सारा का सारा डेटा है पहले एक लैपटॉप में कॉपी कर लीजिए. आफ्टर दैट कॉपी हैव अ बैकअप देयर इटसेल्फ इन अ हार्ड ड्राइव. तो आपके पास ऑलरेडी 2 बैकअप्स हो चुके हैं. सो इवन इफ अगर आपके कार्ड्स फॉर्मेट होते हैं, इट डजंट मैटर. एंड देन व्हाट, आफ्टर द इवेंट इज़ ओवर और आप वापस आ चुके हैं अपने ऑफिस पे, देन अपने मेन सिस्टम में आप एक और को बैकअप कर लीजिए. तो इस वे आपके पास 3 बैकअप्स हो चुके हैं फॉर द कंप्लीट इवेंट. एंड दैट इज़ द वे यू एक्चुअली शुड सेव योर डेटा, एंड दैट इज़ बाय फार द सेफेस्ट वे टू एक्चुअली सेव योर डेटा. ऑल्सो याद रखिएगा कि एक बार आप डेटा सेव कर देते हैं तो जो तीनों बैकअप्स हैं वो अलग अलग जगह रखिए, सो दैट गॉड फॉरबिड अगर एक जगह पर कुछ मिसहैपनिंग हो भी जाती है, देन अगेन आपके पास 2 ऐसी अलग जगहें थी जहां आपका डेटा स्टोर था. द नेक्स्ट मिस्टेक दैट आई ऑफन कम अक्रॉस पीपल डूइंग इज नॉट परफेक्टिंग वन नीश. सो होता क्या है कि फोटोग्राफी वर्ल्ड हैज सो मेनी एस्पेक्ट्स एंड इट इज ऑफन सेड दैट परफेक्टिंग वन स्किल 100 times इज फार बेटर देन परफेक्टिंग 100 skills one time. So now in photography there are wildlife photographers, fashion photographers, maybe product photographers, wedding photographers. And अगर आप अपने idols की जर्नी भी देखेंगे, so they obviously focused on one set of skills and उन्होंने उसको परफेक्ट किया. मे बी आपको वेडिंग शूट करना पसंद है, तो पहले अपनी वेडिंग की स्किल्स को इतना इंप्रूव कर लीजिए कि आप अपने कॉम्पिटिशन से फार एक्सीड कर रहे हैं. एंड वंस यू डू दैट, आपका एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगा कि आप साल की इतनी वेडिंग्स तो कर ही रहे हैं. After that, you can shift to doing other things such as product photography or maybe baby shoots, something like that. But if you're not going to focus on one niche, आप कभी भी एक sustainable business नहीं बना पाएंगे because you will not have a source of traffic जो आपको book कर रहा है and आप shoots कर रहे हैं. So it is very important to have one niche first and after that आप उसको diversify कीजिए. So the next mistake which I have seen so many photographers doing at least once in their life is unnecessary experiments on the set. So होता क्या है, we are often amazed by different kinds of photographers and we feel कि यार okay that when we go at the next shoot we are going to do this kind of portrait or maybe we are going to experiment on them. So for example, अगर आप एक wedding photographer है, you know that wedding is highly based on emotion and moments. So if you miss a moment once, it is gone. Maybe आप couple portraits कर रहे हैं and at that point of time you're trying to experiment something from out of the world which I'm thinking is going to come out amazing. So if it does come out amazing, that is the reward. But अगर वो नहीं होता है, you end up messing the client's pictures for their life and getting a bad word of mouth with them. So it is better कि आप set पे experiment करने से अच्छा है कि आप
अपने फ्रेंड्स या फैमिली पे एक्सपेरिमेंट्स कीजिए. ट्राई बिफोर हैंड एंड डू वॉट यू नो ऑन द सेट फर्स्ट, एंड इफ यू गेट एक्स्ट्रा टाइम only then experiment. Because guys, remember, if you want a sustainable business, अगर आप चाहते हैं कि आपका business अच्छा sustainably चले, then a happy client is a must. आपके client satisfaction is very, very important. So it is often said in the photography business, shoot for the client first, and then if you get time, then only shoot for yourself. Before I move ahead, एक बहुत important चीज़ थी जो मेरे को आपको notice करानी थी, and that is, guys, if you haven't subscribed to my channel, please do hit the subscribe button. It really means a lot. Now, the next mistake is something which even I did a lot when I started my photography business in my initial years, and that is not having proper contracts. अब अगर आप किसी भी फॉरेन फोटोग्राफर से बात करेंगे या मे भी किसी ऐसे इंडियन फोटोग्राफर से बात करेंगे जो बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, you will notice they never take up a project until or unless उसका proper contract बना हो. Now the contract doesn't only safeguards you, but it also safeguards the client as well. आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपका फी स्ट्रक्चर के साथ साथ आपके क्लाइंट डिलीवरीज एंड क्या क्या आप डिलीवर कर रहे हैं, दोनों चीज़ें प्रॉपर्ली मेंशन होनी चाहिए. दैट वेज आप भी एक अच्छे जोन में हैं ना, योर क्लाइंट इज ऑल्सो सेफगार्डेड. इन दैट वेज बोथ ऑफ यू कैन नॉट बी रॉन्ग एट एनी कॉस्ट. इफ़ यू कन्फ्यूज कि आपको कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है, यू डोंट नो हाउ टू राइट एंड हाउ टू प्रॉपर्ली क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑनलाइन मिल जाएंगे विच वुड सफाइस यू इन द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना कैसे चाहिए. एंड आफ्टर दैट वंस यू स्टार्ट टॉकिंग टू क्लाइंट्स, आपको जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, यू विल नोटिस कि क्या क्या चीज़ें आपको कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करनी है. एंड इट इज़ अ एवरलास्टिंग जर्नी. कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअली हर साल चेंज होते हैं. हर साल फोटोग्राफर्स आर डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे शुड हैव इन देयर कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट वेज यू कैन इम्प्रूव डे बाई डे. बट इनिशियली हैव अ बेसिक कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर एटलीस्ट आप ये क्लाइंट को बता रहे हैं कि आपका फी स्ट्रक्चर क्या है, आपकी पेमेंट स्ट्रक्चर कैसे है, कितने टाइम में पेमेंट होनी चाहिए. एंड इन एडिशन टू दैट आप क्लाइंट को ये भी बता रहे हैं कि उनको कितने टाइम में डिलीवरीज मिलेगी, क्या डिलीवरेबल्स है जो आपने उनको देनी है. दैट वेज आप बोथ ऑफ यू आर बाइंडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल वर्किंग प्रोफेशनली. सो दैट एंड्स अप विद कॉमन मिस्टेक्स दैट आई फील फोटोग्राफर्स डज व्हेन दे आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस. होप आपको वीडियो अच्छा लगा गाइज, एंड अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया, डू रिमेंबर टू लाइक, hit the subscribe button, and do share the video with all the photographer friends that you feel are starting a business and should see this video once. Thank you so much for watching. Thanks a lot.